this legendary artists, great composers, singers, wonderful artists, Padma Shri, honored by Inspector General of the paramilitary. My village people never top singers, actor, film star. Thai temples and President of the Ladakh Buddhist Association, the main umbrella of the Buddhists of Ladakh. The great leaders, very senior great leaders, and more than the leaders, very good-hearted.เดี๋ยวโยมเชิญชมภาษาอังกฤษเดี๋ยวชมเชิญมาอยู่ด้านฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อว่าเสียงไมค์ไม่จากแรกพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยชื่ออยู่บนป้าย So now the chief abbot, the Venerable พระธรรมสุปฏิปันโนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะประสงค์ถวายความเคารพประสงค์ปีสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ The chief abbot of Wat Thai Royal Temple, Buddha Gaya, and the chief of the Thai Buddhist missionary in India and Nepal. Venerable Sangha members of the Thai Dhammaduta Bhikkhus in India and representatives from the Royal Thai Embassy, New Delhi. Dear Upasakas and Upasikas from Thailand, our respected Advocate Tashi Gyaltsen, the Honorable Chairman and Chief Executive Councillor of the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Most Venerable Siring Angdus, the Venerable President, All Ladakh Wonpa Association, Shri Siring Dorje, the Honorable President, Ladakh Buddhist Association, and all the respected dignitaries
present here today, the most venerable Paradhamma Bodhiwong and the delegations from the Thai Royal Embassy from Delhi have come all the way to Ladakh, to Mahabodhi International Meditation Center to bless us by presenting the Buddha statue, 73 Buddha statues to mark or to pay tribute to His Majesty the King of Thailand on this auspicious occasion of the 73 birth anniversary. It is indeed a great honor for all of us to welcome Venerable and all the Sangha members and delegates from the Thai Royal Embassy to Ladakh, and we are very grateful to you all indeed. As you all know, Thailand is one of the most beautiful countries in Asia or in the world. This great religion known as Buddhism was born in India, and from India spread the wonderful message of Lord Buddha, the compassion, wisdom, love in all the directions of the world. But unfortunately, in his own birthplace, after certain prayer, declined and disappeared completely, except few places in the Himalayan region. But the neighboring countries like Thailand, Sri Lanka, Burma have received the Buddha's teachings with so much respect, and they have accepted almost like their national religion, and they have preserved the teachings of the Buddha in pristine purity. And today, again, the Buddhism, the revival of Buddhism has started in India, and in this regard, I think the most venerable Sangha members and the devotees, the government, and the Majesty of King of Thailand is playing a great role in supporting the revival of Buddhism in its birthplace. We, the Indian Buddhists, particularly Buddhists, are so grateful to the Sangha members and the devotees of Thailand and His Majesty, the King of Thailand. 성망시켜서 juste joueur polonais 성망시켜서 주된 Pate from Mahabodhi, please come, Pate. ngatai Mahabodhi Nangen monk of the Royal Thai Missionary for India and Nepal. Thank you very much, most venerable sir. A photograph along with the portrait of His Majesty the King of Thailand. Thank you very much. Tena choksa tengatai teni khonchokna tengatai Ladakh gonpat chodusi uskyong teni genlia nijua kulinde teni school kau ketanang atai Thailand ni japo khonai teni ningang atinde teni ika school nan subscription sama jua kulin teni ika yokwa haling atai zatlambo fute skirnama demonstrate no. The second statue being presented to the President of the All Ladakh Gonpa Association. Thank you, most venerable sir. A special photo in front of the portrait of His Majesty the King of the Royal Kingdom of Thailand. To request the President of the Ladakh Buddhist Association, Sri Sring Dorjede, to kindly come here and receive a statue specially sent by His Majesty the King of Thailand. I would request Sri Sring Dorje, who is the Honorable President of the Ladakh Buddhist Association. A special statue will be presented by Most Venerable Pradhamma Bodhiwong, the Chief Abbot of the Wat Thai Royal Temple.
After this, I would like to request Shri Stanton Chospelle, Honorable Executive Councillor in the His Holiness the Lord Abbot, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, to kindly come forward to receive a statue of Lord Buddha from His Holiness the Chief Abbot. Shri C. Punsokle is retired. Next we have, I would request Shri Ishes Pal, I would request you also to kindly come on the stage to receive a special Chindas member sir. Sir, kindly come on the stage to receive a. We also have a representative venerable monk from the Karma Gompa, who's the testing now. And I'm also going to sketches and visual open. Then Pancho Khande, who is a councillor in the Ladakh Autonomous Development Council. In Sampelle, former MLA, the Chief Abbot. I would then request to receive a statue of Lord Buddha. Then we to kindly come up on the stage. Shri Lobsang Shirap, Honorable Councillor yet again. Lobsang Shirap sir. Lisa, Principal, Mahabodhi Residential School. Ma'am, I will request you to come up on the stage to receive a statue. Shri Rigzan Spalverle, Honorable former Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous, you to kindly receive a statue of Lord Buddha. I would request you, sir and ma'am, to kindly come up on the stage to receive a Buddha statue. We have, I would request Ajam Singh Dorje Leh, Ajam Singh Dorje, sir. We were just at the Sonam Memorial Hospital. Pardon me, sir. Dr. Murup Siringle, anesthetist at SNM Hospital. Dr. Murup Siring. We have Shri Chuk, Executive Engineer, UT Ladakh. We have Inspector Dorje, Shojing Dorje, sir, Shri Shojing Dorje, to kindly come up here and receive Shri Tsang to kindly come here to receive a statue of Buddha. Shri Tupsan Girmit again. Shri Sonam Wangchuk Boto from the Samchi Tashi Stopgate. I would request you, sir, to kindly come here to receive a Buddha statue on. I believe we have a representative from Rich Ladakh. I request you also to come here. Okay. Then we have Ms. Rizin Bangambo from JK 24/7. Our very own Ka Srimati Chustale. Kale. From the Miss Patna Dolsering. I would request Mr. Skarpat Sering. Somebody. So I would request everyone to come in line here.
हमारे साथ महाबोधि के फाउंडर डायरेक्टर भिक्खु संघा सेना जी। गुरुजी, आज जो थाईलैंड एम्बेसी की तरफ से जो रॉयल मैजेस्टी की तरफ से 73 बुद्धा स्टैचू दिया गया एक फंक्शन के दौरान। जी, आज हम लोग सबके लिए बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि थाईलैंड की जो महाराजा है, हिज मैजेस्टी ऑफ किंग ऑफ थाईलैंड, उनके ओर से और थाई रॉयल एम्बेसी दिल्ली की ओर से, और जो उनके संघा मेंबर्स है थाई रॉयल टेम्पल बुद्ध गया का जो चीफ एबॉट है, वो थाई कई एक संघा मेंबर के साथ और थाई एम्बेसी स्टाफ के साथ यहाँ आए और हमारे बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए 73 बुद्धा स्टैचू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये उनकी थाईलैंड के महाराजा के 73 बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर किया गया है। ये दुनिया में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। भारत में कम से कम 5000 ऐसे बुद्धा स्टैचू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने लद्दाख महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भी इंक्लूड किया है। और पिछले कई साल से महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और थाईलैंड की जो भिक्खु संघा है, उनके साथ मिलकर के हमने कई प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज किया थे। पाद यात्रा फ्रॉम धर्मशाला से इधर कई 100-150 कभी कभी 200 तक भिक्खु संघा और उनके ले पर्सन लोग यहाँ से ये पाद यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस के लिए किया था। तो आज बहुत खुशी हुआ, हमारे लद्दाख के कई सभी लीडर्स लोग और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गोनपा एसोसिएशन और जितने भी संस्था है और बड़े और सीनियर सिटीजन बहुत लोग यहाँ आए हैं। ये इसके लिए क्या है कि विश्व शांति के लिए नाले। अभी आप हम सब जानते हैं कि दुनिया में इतने वायलेंस अहिंसा हो रहा है, तो भगवान बुद्ध का जो मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, करुणा, दया सब आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मन में रखते हुए ये बुद्धा स्टैचू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत खुशी हुआ है कि अच्छे एक थाईलैंड के बौद्ध लोग और लद्दाख के बौद्ध लोगों के बीच में एक अच्छा एक स्टेप्स हुआ है, अच्छा एक रिलेशनशिप बने, कल्चरल रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो ये थे जो महाबोधि के फाउंडिंग डायरेक्टर भिक्खु संघा सेना जी, जो आज 73 स्टैचू डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बारे में बताया। मैं और मेरे साथी सोनम जी न्यूज़।